Very good afternoon all. Good afternoon. Good afternoon. Good. सब good. कहाँ हैं ये सब लोग, बड़े लोग? ये ठुमकेश्वर राव कहाँ है? खुश हो कि नहीं? बोलो एक सेकंड दीजिए. Give me a moment. Okay sir. Give me a moment. आज हम पढ़ेंगे स्टीम टरबाइन्स. क्या पढ़ेंगे? टरबाइन्स. सब लोग रेडी हैं? So actually there is nothing new in this. मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा sirs. How many of you have attended my power plant? चलो ऐसा पूछने से सही रहेगा. How many of you have not attended? ये सही रहेगा. क्योंकि ना hydraulic machines, सुनो, hydraulic machines whatever we are studying and power plant दोनों का मिक्सचर ये. But now I will not tell you derivation of Eulers Equation, velocity triangle concepts. ये सब नहीं पढ़ाऊंगा sirs. I'm not attended. क्या ये अंग्रेजी सही है रे? Sirs, see. How many of you do not know what is impulse reaction? How many of you do not know velocity triangles? How many of you do not know क्या बोलते हैं Eulers equation of a turbine? ये वाला equation already I have derived. देखो रे, already I have derived one equation. अब देखो ये नहीं आया तो मैं कुछ नहीं करूंगा sirs. Everything is with this only. If you don't know, please. First you cover that because वो गेट में है. Same concepts. Sirs, it's a humble request to all of you. Either you attend the first class of hydraulic machinery or power plant compressors का पहला class. Concepts of velocity triangles, concept of whirl component, then flow component, blade angle. I will not teach anything new again. Starting से मैं नहीं करूँगा sirs, because it is a pure wastage of time and it is a very small topic. It's a very small topic. अरे यार hydraulics अगर नहीं पढ़े तो at least power plant के compressors part पढ़े, velocity triangles. बहुत छोटा पार्ट है सर ये, बट वेरी इंपॉर्टेंट. चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं सर. अब मैं आई विल नॉट टेल यू हाउ टू ड्रॉ वेलोसिटी ट्रायंगल, व्हाट इज VW1, व्हाट इज VF1, व्हाट इज इंपल्स, व्हाट इज रिएक्शंस. ये सब मैं नहीं बताऊंगा सर. अब ये तो मैं नहीं बताऊंगा सर, कसम से. इज दैट फाइन? Is that fine? मैं नहीं बताऊंगा सर, कसम से. चलो आगे बढ़ते हैं. Because already we know that. With an assumption that you have covered my power plant, with an assumption that you know velocity triangles, with an assumption you know this equation, I am proceeding. बढ़ो आगे. अब देखो सर, अब मैं सारा if I start in already I taught you what is the reaction principle, what is impulse turbine. Please जो लोग नहीं पढ़े वो जा सकते सर, because इतना क्लियरली पढ़ाने के बाद भी आप हाँ 2 times आपने पढ़ा है. यस, 2 बार पढ़ाया सर, 2 बार पढ़ाया सर. चलो कोई बात नहीं. Now let's start.
very simple topic, and we'll start in the name of God. Actually, it is a part of power plant only, but I don't know how it came separately. Okay, na? ये तो same क्या बोलते हैं? It's in power plant. So again, we'll start in the name of God. Okay, चलो. Shall we start? Actually, same है रे. The way we are studying, Pelton wheel is impulse. Francis Kaplan in reaction. यहाँ पे भी Parsons reaction turbine, D level, simple D level impulse turbine. बस खत्म है. यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आएगा. क्या एक्स्ट्रा आएगा सर? मैं बताता हूँ. रीहीट फैक्टर आएगा. ब्लेड एफिशिएंसी इक्वेशंस डिफरेंट हो जाएंगे. रिएक्शन का अलग होगा, इंपल्स का अलग होगा. ये सब हम ब्यूटीफुली देखेंगे. हाउ द इक्वेशन ऑफ cos square alpha is coming, how 2 cos square alpha by 1 plus cos square alpha. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है सर. And I request, even though we have around 7 lectures, तो 6 to 7 lectures में ब्यूटीफुली क्लोज करेंगे. अपना टाइम दे देना. ओके ना? चलो. Dear students, we have seen work develop. ये तो टर्बाइन्स है सर. ये सब टर्बाइन्स है. Now देखो सर, आराम से. With that assumption, I'm book. Okay. तो मैं आपको एक ही किताब सजेस्ट करूंगा सर. एक किताब है. Stop McConkie. इसका टाइटल है अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स. मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर ये किताब. मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये किताब. तो बहुत ही अच्छा, ज्यादा अच्छा लगा मुझे. बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा मुझे. आई रियली मुझे फैन होगा ये किताब पढ़ के मैं. ओके, चलो आगे बढ़े सर. We'll move with impulse turbines. What is our working fluid? What is our working fluid? Steam. Very good. Steam is our working fluid. फिर से बता रहा हूँ. Steam is our working fluid. हमारा working fluid है steam. Okay. Now steam is our working fluid. आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर. You know that the power developed by the turbine is given by m dot into VW1 U1 minus VW2 U2. This is, I told you very clearly, this equation is applicable for anything. What do you mean by anything? Already I derived 2 times derived kiya isko. 2 times I derived this equation. What are the assumptions for this? What are the assumptions for this? What are the assumptions for this? The flow has to be steady. And some students, those who are attending for the first time, without attending power plant compressors part, without attending hydraulic machinery, please I request you to leave. पहले वो देख के आ जाना. It's not an individual independent topic. It is a combined topic. Okay, चलो. Observe here. देखो सर, steady flow. If one more thing, please Kiran Babu, leave, because Kiran Babu, it is totally an application part. It is an application part. First, you have to cover some basics. Already, those basics are covered in power plant and hydraulic machines. Those who are absolutely new, please don't attend. Those who are new, don't attend, sirs. Please, those who are new, you will not understand anything. You don't know what is whirl. You don't know what is flow. You don't know what is Eulers equation. Please leave. Immediately you leave. It's a request, sir. Because already the groundwork has been done long back. 2 times I covered the theory on this. Now, basics theory. Now, we have to move ahead. Chal. You tell me, sirs, what is power per unit mass? Can I write this as work? You know very well, power is equal to, dekho sirs, please listen sirs. Power can also be written as mass flow rate into work. And if you want work,
it will be power by mass flow rate. Or if you want work, it will be power. What is power by mass flow rate? What is power by mass flow rate? It is VW1 U1 minus VW2 U2. This is the equation. This is the equation. I do not know whether you remember or not. मैं एक equation दिया था, इधर देखो. VW1 U1 minus VW2 U2 is equal to, I do not know whether, so for turbines it is 1 minus 2, inlet manifold rate, and for compressors and pumps it will be 2 minus 1. So but what are we dealing with? We are dealing with turbines, so it has to be 1 minus 2. Now you tell me, I have derived one equation. देखो एक बार, V1 square minus V2 square by 2 plus U1 square minus U2 square by 2 plus VR2 square minus VR1 square by 2. Do you remember, sirs? मैं ये equation derive किया था. किसको याद है? Already I had derived this equation. Hopefully most of you remember this. So total work has 3 components. So the total work has 3 components. ये actually मैं compressors chapter में derive किया था. In axial flow compressors ये equation derive किया था. In axial flow compressors मैं derive किया था. This we call it as impulse effect. And this we call it as centrifugal effect. And this we call it as, anyone? Very good, sir. सब लोग याद रख ले रहे हैं. मुझे अच्छा लगा. This is reaction effect. This is reaction effect. कोई दिक्कत नहीं, sir. Now one point. We are dealing with steam turbines impulse. I told you very clearly in earlier classes. In impulse turbines, the fluid enters entirely the runner blades with kinetic energy. मतलब nozzle रहेगा. That nozzle will convert the entire pressure of the fluid into, nozzle will convert entire pressure into velocity. So with high velocity, the fluid enters the turbine. Now you tell me, in impulse turbine, is there any role of pressure? No. मतलब जैसे ही fluid blades से flow होता है, there will not be any change in the pressure. So static pressure, it remains constant. Only kinetic energy is used in developing power. Only kinetic energy is used in developing power. So what is our heading, sirs? Our heading is impulse turbines. Our heading is impulse turbines. Is it clear? Is it clear? Excellent, sirs. Excellent. कोई बात नहीं. अब देखो. Now, if U1 is equal to U2, what does it mean? If the fluid is entering and leaving at the same diameter, अगर fluid same diameter पे entry exit होता है, तो U1 U2 same होगा. If U1 is equal to U2, then centrifugal effect is 0. लेकिन ये कैसा हो रहा है सर? एक बार देखना. How this is happening? How this is happening? Let us see. How this is happening? एक बार देख लेंगे. ये हमारा शाफ्ट है, मान लो. ये हमारा शाफ्ट है. इधर देखना. मान लो ये ब्लेड्स है. इमेजिन यहाँ पे सीरीज ऑफ ब्लेड्स है. यहाँ पे ये पैसेज है. इधर देखना सर. इधर देखो. मान लो द फ्लूइड इज एंटरिंग लाइक दिस. ओके, ऐसा जा रहा है. देखो ऐसा निकल जा रहा है. फ्लूइड ऐसा आके ऐसा जा रहा है. अब बताइए सर, इट इज एंटरिंग एट दिस डायमीटर, लीविंग एट द सेम डायमीटर. क्या डायमीटर में चेंज आ रहा है सर? ऐसे ही एंटर होके एक पर्टिकुलर डायमीटर पे एंटर होके ऐसे ही निकल जा रहा है. सो ऐसे ही निकल जा रहा है. बताता हूं सर. यहाँ पे ब्लेड है. इधर देखना. यहाँ पे ब्लेड है. इधर देखो. यहाँ पे ब्लेड है. बहुत केयरफुली देखना सर. बहुत केयरफुली देखना. इधर देखो. फ्लूइड ऐसा आके ऐसे ब्लेड से निकल रहा है. फ्लूइड ऐसा आके. इज देयर एनी चेंज इन डायमीटर? देखो एक पर्टिकुलर इनलेट डायमीटर है, आउटलेट है.
तो इनलेट आउटलेट डायमीटर में कोई फर्क नहीं आ रहा है सर, प्लीज बताइए, आर वी क्लियर? प्लीज डियर स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? तो क्या नहीं सेम सर, आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? ऐसे आके फ्लूइड इधर देखो, ऐसे आके इधर देखो, ऐसे जा रहा है, ऐसे आके ऐसे जा रहा है, ऐसे आके ऐसे जा रहा है। सो फ्लूइड ऐसे आके ऐसे निकल जा रहा है, ऐसे आके ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब से entering diameter, leaving diameter is same. Entering diameter, leaving diameter is same. So can I say U1 is equal to U2? Yes, sir. फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे in impulse turbines which we are studying, U1 is equal to U2. So therefore, please my dear students, ये zero हो जाएगा। And one more thing, देखो actually passages कैसे रहेंगे मैं बताता हूँ सर। How the passages look like मैं बताता हूँ, इधर देखो। हम बात कर रहे हैं स्टीम टर्बाइन्स की। Passages are like, अब देखो सर, प्लीज ऑब्जर्व, द फ्लूइड इज फ्लोइंग लाइक दिस, इससे ऐसा जा रहा है, इधर देखो। So is the flow area changing? No. Is the flow area changing? Neither converging nor diverging. तो इनलेट से एग्जिट तक फ्लो एरिया चेंज नहीं हो रहा है। The flow area is not changing. So इसीलिए प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट। बट हम रिएक्शन टर्बाइन्स जब पढ़ेंगे फ्लो एरिया चेंज होगा, डोंट वरी। तो दैट्स व्हाई इन इंपल्स टर्बाइन्स द स्टैटिक प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब the fluid enters with high velocity and leaves with low velocity because of the difference in kinetic energy. Because of the difference in kinetic energy, the work or power is developed. And if it is, listen sirs, if it is an ideal impulse turbine, anyone in the class, anyone, if it is an ideal impulse turbine, there is no friction, there is no friction। बताया था ये सब चीजें पेल्टन में बताया था, all these I explained। If it is an ideal impulse turbine, VR1 is equal to VR2। अगर ideal impulse turbine है तो VR1 is equal to VR2। But if friction is present, if friction is taken into account, what will happen, sir? The relative velocity at exit will be less than relative velocity of inlet, and thereby there is a term known as, all these मैं पढ़ाया था, all these we have studied, it is blade friction coefficient। Anyone, what is the equation for blade friction coefficient? That is VR2 by VR1। Is it correct? VR2 by VR1, is it correct? Is it correct? क्या ये समझ में आ गया सबको? यस, नो, प्लीज लिसन सर, प्लीज लिसन। तो यहाँ पे द फ्लूइड इज एंटरिंग, प्लीज लिसन, इट्स लाइक दिस, द फ्लूइड इज एंटरिंग, ये पैसेजेस से फ्लो होते हुए बाहर जा रहा है। इट मींस इट्स डायमीटर इज नॉट चेंजिंग, मतलब जिस इनलेट डायमीटर पे आ रहा है वो वैसे ही जा रहा है। अब रोटर है यहाँ पे, ऑन दिस देयर इज अ रोटर, इधर देखो रोटर है, देखो देयर इज अ रोटर। सो रोटर पे इधर देखना सर आराम से, कोई बात नहीं। अगर ये रोटर है, फ्लूइड ऐसे आके इट्स लीविंग लाइक दिस, इट्स लीविंग, तो इट इज नाइदर मूविंग आउटवर्ड्स नॉर इनवर्ड्स। जब बाहर या अंदर जाएगा तो डायमीटर चेंज होगा, लेकिन यहीं पे एंटर होके यहीं से जा रहा है, तो इनलेट एंड आउटलेट इज एट द सेम डायमीटर। तो कैन आई से U1 U2 आर सेम सर? सर एवरीथिंग शुड बी विजुअलाइज्ड, एवरीथिंग शुड बी विजुअलाइज्ड। बोलो सर, बोलो। डाउन, वंडरफुल सर, वंडरफुल वंडरफुल। अगर फ्रिक्शन है तो वो रिवीजन हो रहा है। यस एग्जैक्टली नितिश, रिवीजन हो रहा है, अब आएगा सर। नाउ लेट अस टेक, एक्चुअली देखो, लुक एट केयरफुली, लुक एट केयरफुली, बहुत केयरफुली देखना सर, बहुत केयरफुली। फ्लूइड ऐसा आके ऐसे जा रहा है, तो इनलेट पे एक वेलोसिटी ट्रायंगल होगा, आउटलेट पे एक वेलोसिटी ट्रायंगल। इधर देखो, देखो मैं अब बता रहा हूं, इधर देखो प्लीज लिसन। द फ्लूइड इज एंटरिंग एंड लीविंग लाइक दिस, और एंटरिंग एंड लीविंग लाइक दिस, कहीं पे भी लाइक दिस और लाइक दिस। तो क्या होगा सर, इसको मैं ऐसे करके देखो, एक्चुअली फ्लूइड इज देखो एंटरिंग एंड लीविंग लाइक दिस, एंटरिंग एंड, तो मैं क्या कर रहा हूं,
सेम को ऐसा कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? तो एंट्री का ट्रायंगल, एग्जिट का ट्रायंगल। नहीं आ रहा सर समझ में? प्लीज बताइए, आर यू गेटिंग और नॉट? अरे यार फ्लूइड ऐसा है तो ऐसे देखो, एंटरिंग लीविंग, एंटरिंग लीविंग, तो सेम को मैं एंट्री एग्जिट दिखा रहा हूं। अरे यार फ्लूइड इज एंटरिंग एंड लीविंग, एंटरिंग, तो सेम को मैं ऐसे एंटरिंग लीविंग दिखा रहा हूं। इज इट फाइन? इज इट फाइन रे? नो, आराम से, आराम से इधर देखो। कोई टेंशन मत लेना सर, विल डू इट। लेट अस अज्यूम द ब्लेड इज मूविंग लाइक दिस। एक्चुअली ब्लेड ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो यही तो दिखाया मैं, ऐसा शो। समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है? ब्लेड को शो करो। अब देखो, द एंट्री एंड एग्जिट इज ऑलवेज, entry and exit is always, yes, yes, exactly, relative. Very good. Entry and exit is always relative. Wonderful sir, wonderful. अब देखना, the fluid is entering, कभी भी याद रखना, ब्लेड को फॉलो करते जाएगा, ब्लेड को फॉलो करते जाएगा, ब्लेड को फॉलो करते जाएगा। इधर देखना, so therefore I write it as anyone, VR1. Excellent, excellent. अब ब्लेड का स्पीड कैसा है सर? एनीवन इन द क्लास? ब्लेड का स्पीड कैसा? राइट वर्ड, राइट वर्ड। तो यहां लिखूंगा u। देखो, व्हाट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी? अब ये मैं नहीं बता रहा हूं सर, एवरीथिंग वी नो। व्हाट इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ब्लेड, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ ब्लेड एंड रिलेटिव। ये दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए सर? व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू? क्लोजिंग शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये सारी चीजें बताया, कुछ नया नहीं है सर, ये मेरा क्लोजिंग साइड हो गया। तो क्लोज देखो, राइट डाउन अप, लेकिन क्लोजिंग शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। लेट मी एक्सप्लेन, like this, closing should be the opposite direction. ये मेरा, एक सेकंड सर, वेरी गुड, आराम से देखो सर। is there any problem with this? Is there any problem with this triangle? Sirs, is there any problem with this? फ्रांसिस में U1 U2 सेम है प्रदीप? फ्रांसिस में U1 U2 सेम था या पिल्टन में सेम था? हाँ, फ्रांसिस में कभी मैं U1 इज इक्वल टू U2 बोला सर? हाँ, फ्रांसिस में कभी बोला सर? फ्रांसिस में तो रेडियली अंदर आता है, तो आउटर डायमीटर इज मोर, इनर डायमीटर इज लेस। क्या हो रहा है सर आपको? क्या हो रहा है सर आपको? देखो, ये फ्लूइड कहां से आएगा? इट इज एन इंपल्स टर्बाइन। इन इंपल्स टर्बाइन फ्लूइड कहां से आएगा? नोजल से। अब देखो, दिस इज द नोजल, दिस इज द नोजल। अब नोजल से आएगा, तो नोजल से एब्सोल्यूट वेलोसिटी आएगा, लेकिन एंट्री किस कहां से हो रहा है? नोजल से एब्सोल्यूट आएगा, लेकिन ब्लेड ऐसा मूव हो रहा है, सो देयरफॉर एंट्री इज रिलेटिव, एंट्री इज रिलेटिव। देखो, ये जो वेलोसिटी, द वेलोसिटी विथ व्हिच इट इज कमिंग, दिस इज फ्रॉम नोजल, दिस फ्रॉम नोजल, बट द एंट्री इज नॉट विथ V1। एंट्री इज, फ्लूइड इज फ्लोइंग, ब्लेड इज मूविंग, फ्लूइड इज फ्लोइंग, ब्लेड इज मूविंग, तो एंट्री इज रिलेटिव से होगा, रिलेटिव। ग्रेट। अब आइए सर, ग्रेट। नाउ देखो, प्लीज ऑब्जर्व हियर, एंड डियर स्टूडेंट्स, नोजल से आ रहा है, तो दिस वी कॉल इट एज नोजल एंगल। व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम नोजल, दिस वी कॉल इट एज नोजल एंगल। ये नोजल एंगल देखो, रिलेटिव, टेंजेंशियल।
So this we call it as blade angle. Some students say, sir, ये क्यों बोल रहे? ये बोलो ना. Can anyone tell what is beta 1? It is the exterior blade angle. All these I had explained. All these. This is exterior blade angle. Clear. Now one more thing. यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? थोड़ा प्लेस चाहिए सर, सो मैं इसको हटा दूंगा. This is nozzle. Now, अब देखो सर, कौन है रे ये कंफ्यूजन वाला? कंफ्यूजन वाला कौन है रे? प्लीज ये क्लास, if you have not attended my earlier power plant classes of compressor and hydraulic equations, you don't understand. That's why I said leave the class, bola main. That's why I said any brand new students, it is an application part. Please leave the class. Please, I request you to leave the class. जो लोग नए हैं, absolutely new students, you will not understand anything. It is totally bouncer to you. आप please कृपया leave करो. Those who are very new to the class, ये मत सोचना कि ये सब्जेक्ट शुरू हुआ, ये सब्जेक्ट शुरू होकर नया सब्जेक्ट मत सोचना. इट्स नॉट अ न्यू सब्जेक्ट, इट इज एक्चुअली पावर प्लांट का कंटिन्यूएशन, बट आई हैव शोन इन सेपरेट टॉपिक. कौन है रे वो कंफ्यूजन वाला? कौन? अब मुझे ब्लेम मत करना सर, प्लीज डू नॉट ब्लेम मी. देखो कभी भी याद रखना, मिस्टर नितेश, देखो एक बार, whenever the exit blade angle से forward backward होते हैं, whenever the exit blade angle is less than inlet blade angle से forward backward नहीं बोलते. सुनो, कभी भी याद रखना, blade angle is exit. जब बीटा less than 90 होता है backward, when beta 90 radial, when beta greater than 90 forward. तो अभी मैं तो इनलेट ड्रॉ किया, हाउ कैन आई टेल दिस इज, समझना. देखो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, जो लोग पूरे नए हैं, some students may be very new to the class, leave the class. You will not understand anything. Actually, it is not a new subject. It is a continuation of the previous subject, power plant. Please blame मत करना मुझे. नए कितने नए लोग हैं सर? पहले बोलो. पूरा मतलब एक भी क्लास अटेंड नहीं किए. कितने नए लोग हैं? कोई है? मुझे नहीं चाहिए सर नए लोग अभी इस सब्जेक्ट के लिए. Rohit, please, Rohit, you will not understand anything. It's a request. You will not understand. It's a request. You leave it. If you have already followed my earlier classes, you can go ahead. But no. Okay, right. आगे बढ़ूं मैं. क्लास शो नहीं कर रहा है बोलता है. क्या स्टूडेंट्स है रे? हाँ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है सर? और एक बात, you tell me what is this? What is this? Anyone? V1 का tangential, तो I will write this as VW1. And ये क्या है रे? Anyone? V1, this is anyone? Very good students of India. VF1. Wonderful, sirs. Wonderful. What is the direction of VW1? Anyone? What is the direction of VW1? Right or left? V1 is like this. This is my VW1 and this is my VF1. Great. Wonderful, sis. Wonderful. Great. कोई बात नहीं. Now, I think there is no problem with inlet triangle. Is there any problem with inlet triangles? Is there any problem with exit triangle? Fluid देखो. Listen, sirs. Fluid is flowing with relative velocity is entering and it follows blade and it leaves. What is this velocity? Anyone in the class? What is this velocity? Anyone in the class? What is this velocity? It is relative velocity. So अब आप देखो सर,
आइडियल की बात करेंगे. If I talk about ideal, what should be the relative velocity? I told you very clearly, relative velocity क्या होना चाहिए? Same होना चाहिए. All these I had explained. So same length I am taking, same length. Great. Same length. मान लो same length है. Same length. Okay, VR1, VR2. So it comes out with VR2. मान लो same length है. Then what is the direction of this rightward? So blade speed, again the blade, it is entering and leaving at the same diameter. U भी same होना चाहिए. अभी तो बताया entering and leaving. So therefore it is, let this be U. अब closing side क्या होना चाहिए सर? Okay, VR to U, and closing should be in the opposite direction. देखो ऐसा. So this should be in the opposite direction, like this. So this should be in the opposite direction. कोई प्रॉब्लम है सर? आपको कोई प्रॉब्लम है सर? Please tell me यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? I don't see any problem, sir. Exit blade relative should be in the opposite direction. No problem at all. Now, because sir, relative tangential. Can anyone in the class tell what is this angle? Relative tangential. Anyone? Beta 2. Wonderful, Tanuj. Beta 2. V2 has two components. This absolute velocity has two components. What are those? This absolute velocity has two components. This absolute velocity has two components. One is, देखो, ये क्या है? देखो रे. This has two components. One is, ये कौन सा है सर? Anyone? आप बोलो सर. ये कौन सा है? Anyone? V2 has. This is VF2, and this is VW2. This absolute velocity has two components. One is flow, one is tangential. This is VW2. What is the direction of VW2? What is the direction of VW2? It is leftward. What is the direction of VW1? It is rightward. Wonderful, sirs. So यहाँ तक किसी को कोई problem है या नहीं? Till now, is there any problem, my dear students? If there is a problem, please ask me. I'll clear. Okay, एक second अभी है. 1 second, please. ओके चलो आगे बढ़े. यस हो सकता है सर, लेकिन मुझे यस ट्रू इट कैन बी, हो सकता है सर. ओके बताया था ऑलरेडी. डिपेंडिंग ऑन आवर वैल्यूज वी डू इट. कोई बात नहीं, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है.
Till now there is no problem. अब बताइए सर, what is the power? What is the power? Can I write the power as m dot into VW and U1? Can we write, sir? आपको कोई प्रॉब्लम है सर? ये for applying this equation, what is the condition? Beta 2 is greater than 90. कहाँ beta 2 90 से ज्यादा है सर? कौन बताए? देखो डॉक्टर प्रदीप ने बोला हाँ बीटा 2 यहाँ पे कहाँ ग्रेटर देन 90 है सर? अब बताओ सर, नहीं है ना, इसमें तो नहीं है. Yes, only steady flow, only steady flow. Now observe here. So power is equal to m dot VW and U1 minus VW2. But यहाँ पे already you know U1 is equal to U2. जब U1 U2 सेम है तो क्या लिखेंगे सर? m dot into when U1 U2 is same, this can be written as VW1 minus VW2. U1 U2 सेम है तो इसको U लिखो तो U हो जाएगा. Let me write it as U. कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत? Anyone in the class, is there any problem? No. अब देखो, so power can be written as, be careful sirs, power can be written as m dot. But इस केस में what are the directions of देखो VW1. I'm talking specifically with this triangle. I'm talking specifically with this triangle. So VW2, it is right, it is left. It is right, it is left. तो minus VW2, दोनों के directions opposite है. So therefore the power is given by m dot into VW1 plus VW2. इस केस की बात कर रहे हैं. Is it clear? पावर आ गया. Now I want the diagram, or sir, if U and VW2, are in the same direction. No sir, ऐसा कैसा होगा प्रदीप? इधर देखो, VR2 beta 2 U. अब बताइए सर, what is the direction of VW2? What is the direction of VW2, Pradeep? Right है. U and VW same है. Beta 2 is it greater than 90? Pradeep बोलो. Got it ना? Very good. देखो सर, what is diagram or blading efficiency? Or blade efficiency? Anyone? The diagram, this power is also known as runner power. इस पावर को क्या बोलेंगे? रनर पावर भी बोलेंगे. इस पावर को क्या बोलेंगे सर? रनर पावर भी बोलेंगे. सर नितेश, you are wrong. Whatever you are giving, wrong. You are giving hydraulic efficiency. Wrong, sirs. Please, आप mistakes मत करना. The diagram means output from the diagram or output from the blade, input to the blade. Diagram efficiency means output from the blade, input to the blade, and it is runner power by kinetic energy. Runner power by kinetic energy. Runner power by kinetic energy. Is there any problem? Runner power by kinetic energy. Is it clear? And what is kinetic energy? It is half m dot v1 square. Yes or no? What is kinetic energy? Half m dot v1 square. Half m dot v1 square. Is it correct? ये हमारा kinetic energy होगा. Yes or no? अगर आप yes बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा. Is it correct? So please be careful. Whenever I say diagram or blade efficiency, output from the blade is runner power. Input in impulse turbine, it is an impulse turbine. In impulse turbine, the input energy is kinetic energy. The input is kinetic, output is runner. Is it clear? Is it clear? Is it clear? Yes, अब आगे बढ़ते हैं. Now I read. देखो सर, बहुत carefully देखना. So the diagram or blade efficiency एकदम क्लियर. इसका रीजन भी बताया था कि हाँ,
सुनो डायग्राम, व्हाट इज रनर पावर, व्हाट इज रनर पावर, देखो रनर पावर m डॉट VW1 plus VW2 into U by kinetic energy. What is kinetic energy? Half m dot V1 square. Correct now? So let me take this to top. तो देखो m dot गया तो ये 2 ऊपर जाएगा, 2U into 2 ऊपर जाएगा, VW1 plus VW2 by V1 square. Is it correct? Is it correct? अब देखो sirs, you may be thinking it is exactly same as Pelton wheel. You may be thinking it is exactly same as Pelton wheel. लेकिन I say no. What is the reason for no? Because in Pelton wheel, the inlet triangle is straight line. Because the inlet blade angle is 180 degree, not 0, sirs. I explained very clearly. Inlet velocity triangle is a straight line, but here inlet velocity triangle is not a straight line. Be careful, sir. There is a difference. Though यहाँ तक same है, लेकिन there is a difference. So let me take this equation and we'll proceed. बोलो. Is it okay? Is it okay? Now, देखो sirs, बहुत carefully देखना, बहुत carefully देखना. This is very, very important. Now, I will go for some assumptions. Condition for maximum. That Rodero, Gringala for maximum blading efficiency. Condition for maximum blading efficiency. Condition for maximum blading efficiency. But the problem with you is, आप कभी भी assumptions को care नहीं लेते. You don't take care of assumptions. देखो assumptions first. Steady flow. Second, blades are frictionless. Okay. Third, टर्म समझ में नहीं आया सर. थर्ड टर्म समझ में नहीं आया सर. आपको स्टेडी फ्लो तो आइडिया है, मास फ्लो रेट इज कांस्टेंट, ब्लेड्स आर फ्रिक्शनलेस. ब्लेड्स आर फ्रिक्शनलेस का मतलब क्या है? VR1 VR2 सेम है. ब्लेड्स आर फ्रिक्शनलेस इसका मतलब VR1 VR2 सेम है. ब्लेड्स आर फ्रिक्शनलेस मतलब VR1 VR2 सेम है या नहीं? यस. बोलो सर. एंड सिमेट्रिक. ब्लेड्स आर सिमेट्रिक. It means whenever I say blades are symmetric, inlet blade angle and outlet blade angles are same. Whenever I say blades are symmetric, the inlet and outlet blade angles are same. Whenever I say blades are symmetric, अब देखो कैसे, इधर देखो सर, please listen. एक बार देख लेना. The blade is something like this. तो अगर आप देखेंगे इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है? सेम है. इसका मतलब देखो ये β1 और β2, ये वाला पोर्शन, ये देखो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. इधर देखो, ये वाला समझ गए ना? ये एंगल सेम है. दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्लेड्स आर सिमेट्रिक. सेम होना जरूरी नहीं है, but whatever I am deriving now, it is for symmetric. This angle is same. This angle is same. Please बताइए, are we clear? No, there is no specific name. Plate type बोलते हैं actually. Plate PLATE, क्योंकि ना
एक प्लेट से वो कट करते हैं, प्लेट टाइप बोलते हैं, प्लेट टाइप PLAT। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। अब बीटा 1 इज बीटा 2, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है सर? These, see, if you are not taking care of assumptions, you will always be in problems. What are the assumptions? Steady state, frictionless, steady state, frictionless, and blades are symmetric. चलो कोई बात नहीं, इधर देखना सर। What does it mean? VR1 is VR2, beta 1 is beta 2. अब आइए, now let's come to this triangle. नहीं, अरे यार क्या है रे आप भी, प्लीज ऑब्जर्व, ऐसा है तो जो एंट्री हो रहा है इसका टेंजेंशियल डायरेक्शन एग्जिट हो रहा है। क्या सर आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते? क्या सर, देखो ब्लेड को हम ऐसा करेंगे तो ये वाला एंगल सेम नहीं रख सकते सर? कांट वी कीप केम? यस वी कैन कीप, देयर इज नो प्रॉब्लम सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके, अब देखो सर, नाउ व्हाट वी डू इज, बहुत केयरफुली देखना सर। Dear students, till now, is there any problem? Dear students, till now, is there any problem? अब देखो सर, same triangles we have drawn. अब आगे बढ़ूं मैं? आगे बढ़ू सर? Shall I proceed? ये आ गया अपना ट्रायंगल सर। पहले ब्लेड एंगल को डिफरेंट ले के एनालिसिस क्यों नहीं कर सकते? नहीं कोई नहीं यार, यस इट कैन बी डिफरेंट, तो यहाँ पे मैं सिंपल वे में थोड़ा इजी होने के लिए एंगल सेम लिया। सी इट डजंट मीन कि so I'll be taking same and different sirs. When I take numericals, don't think that I'll be taking every time same. No, I'll be taking different also. एक सिंपल केस बता रहे हैं हम। ओके राइट, नाउ अब बताइए सर, what is VW1? My dear students, what is VW1? Anyone in the class? What is VW1? What is VW1? V1, देखो, what is VW1? ये opposite होगा, ये adjacent. Can I write VW1 as V1 cos alpha 1? Can I write VW1 as V1 cos alpha 1? बोलो सर, अरे यार ये ट्रायंगल है रे, आप लोग भी कैसे नमूने हैं। This is the triangle. तो what is VW1? V1 ये sin ये cos, V1 ये sin ये cos, VW1 is V1, लिख सकता हूं या नहीं? Can I write, dear students? Yes, I can write. So there is no problem with VW1. Now come to VW2. इधर देखना सर, अब देखो सर, dear students इधर देखो, क्या ये लेंथ बता सकते हैं आप? This is the complete triangle. तो ये साइन होगा, ये VR2 cos beta 2 लिख सकता हूं सर? लिख सकता हूं या नहीं? तो ये अपोजिट है, एडिशन VR2 sin VR2 cos beta 2 लिख सकता हूं सर? लिख सकता हूं। अब आप बताइए व्हाट इज VW2? VW2 क्या है? एनीवन? VW2 क्या है? VR2 cos beta 2 minus u. Any problem, sir? Anyone in the class? What is VW2? VW2 is VR2 cos beta 2 minus u. But you have, is it clear, sir? अरे यार ये total length minus u. Total length minus u is VW2. Total length minus u is VW2. Is there any problem? Total length minus u is VW2. Okay, this total length is VR2 cos beta 2 minus u is VW2. अब देखो सर, VW2 is equal to VR2. What is VR2? What is VR2? VR1 cos. What is beta 2? What is beta 2? Beta 1. Correct. Is it correct or wrong, sir? But अब देखना, इधर देखो, केयरफुली देखो,
क्या आप ये लेंथ बता सकते? कैन एनीवन इन द क्लास टेल व्हाट इज दिस लेंथ? This is VR1, this is sine, this is cos. This is VR1, this is sine, this is cos. So this is VR1 cos beta 1. Very good. So now VW2 is equal to, what is VR1 cos beta 1? VR1 cos beta 1 is VW1 minus U. VW1 minus U. Let me repeat. VR1 cos beta 1, this length is VW1 minus U. So therefore it is VW1 minus U. So VW2 is equal to VW1. What is VW1? What is VW1? V1 cos alpha 1. देखो V1 cos, ये ऑलरेडी यहाँ पे -2 है. देखो VR1 cos beta 1, VR1 cos beta 1, VR1 cos beta 1 is VW1 minus U. VR1 cos beta 1 is VW1 minus U. VR1 cos beta VW1 minus U. VR1 cos beta 1 is VW1 minus U. Minus U is there. फिर से बता रहा हूँ. VR1 cos beta 1 is VW1 minus U. So this is VW1 minus U, minus U. So VW1, what is VW1? V1 cos alpha 1 minus U into U is to U. Please बताइए सर, यहाँ तक समझ में आया या नहीं? Finally, I'll tell you from GATE examination point of view what are the things to be remembered. GATE के point of view से मैं बताऊंगा, उसके लिए कोई चिंता नहीं है. Clear, clear, clear. Clear or not clear? Clear or not clear? Clear or not clear? Pakka? Pakka clear? Okay, now bleeding efficiency is equal to, dear students, इधर देखना, 2 U by V1 square, U by V1 square into 2 U by VW1 plus VW2, VW1 V1 cos alpha 1 plus VW2. What is VW2? V1 cos alpha 1 minus 2U. क्या ये करेक्ट है या गलत है? क्या ये करेक्ट है या गलत है? Now I have just substituted values of, dear students, I have just substituted values of VW1 as this much, VW2 as V1 this much. So therefore the diagram or bleeding efficiency is given by 2U by V1 square into V1 is 2V1 cos alpha 1 minus 2U. Exactly correct. But what is the heading? Condition for maximum bleeding efficiency. Okay. Now let's take the same equation. So the diagram or bleeding efficiency is given by 2U by V1 square. Correct now? 2U. देखो 2U by V1 square. 2V1 cos alpha 1 minus 2U. 2V1 cos alpha 1 minus 2U. Let me check. 2V1 cos alpha 1 minus 2U. Correct. Wait. I will define one term known as blade speed ratio. What is blade speed ratio? U by V1. Wonderful, sirs. Blade speed ratio U by V1. एक second रुको. The diagram efficiency is given by 2 को बाहर ले लेना. 2 को बाहर ले लेना. इधर देखो. U by V1 square 2V1 cos alpha 1 minus, अरे यार ये 2 को भी बाहर ले लेना, क्या दिक्कत है? नहीं आ रहा समझ में. वही this 2 is also taken out. So therefore 4U by V1 square नहीं आ रहा सर. 2 is out. So this is V1 cos alpha 1 minus U. Correct? 2 बाहर लिया. Okay. Is it okay? अब देखना सर. So the diagram or bleeding efficiency is given by 4 into U V1 by V1 square cos alpha 1 minus 4 तो बाहर है. U into U is U square by V1 square. Correct. So अब देखना सर, ये V1 कट गया. So the diagram efficiency is given by 4 into U by V1 cos alpha 1 minus U square by V1 square. This is the general equation. I have not put any maximum efficiency condition. So can we write this as the diagram efficiency as 4 times what is U by V1? Rho cos alpha 1 minus U square by V1 square. It is rho square. Any problem?
This is the general equation, but what are the conditions? इसको apply करने के लिए I have used all this. I have used beta 1 is equal to beta 2, VR1 is equal to V2. हम ये सब use किए सर. इसको derive करने के लिए ये सब use किए. नहीं आया समझ में. इसको derive करने के लिए steady flow use किए. VR1, VR2, beta 1. So these are the values. अब देखो. Now I write maximum. देखो. Whenever you want something maximum or minimum, you always differentiate with variable. But यहाँ पे एक doubt है सर. यहाँ पे रो भी है, अल्फा 1 भी है. But actually अल्फा 1 is constant. I think this also I had explained. अल्फा constant है. क्यों constant है सर? इधर देखना. Logically देखना सर. Logically देखना. Why alpha is constant? I'll explain. Why alpha is almost constant? इधर देखो. From the nozzle, it is coming out. From the nozzle, it is coming out. I'll give you some situations. This is one case. This is another case. Now you tell me. Dear students, अब बताइए. This is your whirl component and this is your flow component. And ये होगा आपका whirl component और ये होगा आपका फ्लो कंपोनेंट. बताइए सर, जब अल्फा कम हो रहा है तो क्या हो रहा है सर? whirl component is increasing. It's a good sign. Whenever the whirl component is increasing, देखो power depends on what? देखो यहाँ पे you have written an equation. So the power is given by, देखो रे, the power is given by power m VW1 plus VW2. अगर VW1 ज्यादा है तो power will be more. It's a good sign. When VW1 is more, power will be more. It's a good sign. So therefore, इस केस में देखो सर, इस केस में VW1 ज्यादा है तो power will be more. It is a good sign. इस केस में, if I am increasing angle alpha, if I am increasing the angle alpha, what is happening? अगर alpha को बढ़ा रहा है तो whirl component is coming down. So यहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा सर एक triangle. इधर देखो, यहीं पे अगर देखो, if I increase the angle, देखो सर same. If I increase the angle, what is happening? The whirl component is decreasing, flow is increasing. When the whirl is decreasing, the power is decreasing. So what angle do you want? Some students said, sir, keep it completely, keep alpha 0. Sir, keep alpha 0. If alpha is 0, actually it has to flow na. Actually it has to flow na. इसीलिए तो हम क्या करते हैं? तो maximum से maximum whirl को रखने के लिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम whirl को रखने के लिए, और ये भी तो चाहिए, फ्लो तो होना है. यू नो फ्लूइड शुड डेवलप पावर एंड फ्लो, इट शुड लीव. तो फ्लो भी तो चाहिए. समझ गए? सो देयर फ्लो भी तो चाहिए. तो दैट्स व्हाई इसको हम 15 डिग्रीज टू 18 डिग्री या 20 डिग्री रखते हैं. 15 टू 80. तो ये तो फिक्स हो गया. समझ गए सर? समझ गए सर? समझ गए सर? तो दैट्स व्हाई अल्फा इज फिक्स्ड. होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस. इसलिए हम अल्फा से डिफरेंशिएट नहीं करते सर. दैट्स व्हाई we don't differentiate with alpha. That's why we don't differentiate with alpha. We differentiate with rho. समझ गए? Alpha is almost fixed around 15 degree. Around 15 degrees पे fix हो गया सर. Because alpha ज्यादा करने से whirl is coming down. So alpha कम करने से flow is coming down optimum के लिए. अब देखो. Now for maximum efficiency, for maximum blading efficiency, differentiate with rho and equate it to 0. Differentiate with rho and equate it to 0. तो क्या होगा सर? देखो, करो. 4 is constant. 4. This is the general equation of efficiency. This is the general equation of efficiency. This is the general equation of. अब differentiate करो तो क्या होगा? You are differentiating with rho. Rho का differentiation क्या है? 1 cos alpha 1 minus rho square
is 2 rho. That should be equal to 0. Whenever you want something maximum or minimum, you differentiate and equate it to 0. तो 4 to 0 हो ही नहीं सकता. So cos alpha 1 is equal to 2 alpha और rho is equal to cos alpha 1 by 2. And जो लोग गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, this is a very very important deduction. Those who are preparing for gate, ये बहुत important है sir. For steam turbines, steam impulse steam turbines, for maximum blading efficiency, what is the speed ratio? In Pelton wheel क्या था sir? वो half था, क्योंकि alpha 0 था. Because alpha was 0. समझ में आया? यहाँ पे नहीं है सर, इसका शेप वैसा नहीं है. So therefore ये बहुत important है. So in this alpha, देखो rho is equal to u by v1 is equal to cos alpha 1 by 2. This is what? Anyone? This is the condition for maximum. This is the condition for maximum blading efficiency. And if you want maximum blading efficiency, देखो अगर ये condition यहाँ पे put करूं, if I put that condition, अगर ये condition यहाँ पे put करूं तो क्या मिलेगा? Maximum efficiency. If I put this condition here, I'll get the maximum efficiency. So therefore, the maximum efficiency is given by 4 into rho. What is rho? Cos alpha 1 by 2 into rho into cos alpha 1 minus rho square. What is rho square? Cos square alpha 1 by 2. नहीं आया सर समझ में? नहीं आया सर समझ में? Let me repeat sir. If I put this condition here, I'll get the maximum efficiency. So 4 into rho is cos alpha 1 by 2. Cos alpha 1 into cos alpha 1 is cos alpha 1 by 2 minus rho square. What is rho square? Cos alpha, ये इसका square, cos alpha 1 square by 4. 4 क्यों आया? क्योंकि इसका square है. Please tell me, is it clear? So therefore, the maximum efficiency is given by 4 into cos square alpha 1 by 2 minus cos square alpha 1 by 4. Excellent sir. So the maximum blading efficiency is given by 4 into इधर 2 से मल्टीप्लाई करना, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना 4 2 मतलब cos square alpha 1, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना तो cos square alpha 1 by 4. So therefore the maximum efficiency is given by cos square alpha 1. This is very important sir. तो impulse turbines के लिए बहुत important points है. This is the condition for maximum blading efficiency. This is the condition for maximum blading efficiency. And please note down that देखो and this is maximum. ये condition है और ये maximum है, याद रहेगा सर. If the nozzle angle is 15, what is the maximum blading efficiency? पूछ सकता है. लेकिन for this, what are the conditions? The conditions are steady, frictionless, that is ideal, that is frictionless, and the third one is, देखो third one is symmetric. यहां तक किसी को समझ में आया सर? क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है सर. So let me take up some questions on this so that you will appreciate. यहाँ तक कोई clear? Those who are preparing for gate, conditions should be known. You should know conditions and you should know equations. So the condition for maximum efficiency is cos alpha, blade speed ratio should be cos alpha 1 by 2. Rho should be equal to cos alpha 1 by 2. And the second one is the maximum efficiency is cos square alpha 1. That's it. यही है conditions. Clear है? And इसके लिए steady flow जरूरी है.
सिमेट्रिक जरूरी है, एंड VR1 इज इक्वल टू VR2, ये होना है. दैट्स इट. आगे बढ़ो सर. नाउ लेट मी टेक अप सम वेरी गुड क्वेश्चंस, सो दैट लेट मी टेक अप, मैं फाइल को अपलोड कर रहा हूं सर, सो दैट यू विल अप्रिशिएट. अरे यार, अभी अभी मैं फाइल को अपलोड करूंगा. आई एम अपलोडिंग द फाइल. एक सेकंड प्लीज. अभी फाइल अपलोड कर रहा हूं. देख अभी पढ़ो सर. फर्स्ट यू रीड दिस क्वेश्चन. आई एम बैक. चल, let's proceed. It's a very good question. Okay, okay, okay. कोई बात नहीं. Okay, man, take care. Man, okay, take care. Now, ये सवाल है सर. ये सवाल है. Please listen. This is the question. Shall I proceed? This is the question. The velocity of steam leaving the nozzle of anyone. What is this velocity? Very good, sir. This is our V1. And the nozzle angle is 20. Okay, alpha 1. Very good. The blade velocity is, what do you mean by blade velocity? U. Blade velocity is U. How much is that? How much is that?
300 meter per second. The blade velocity coefficient is 0.7. Be careful. What is given? K. It is 0.7. Calculate the mass flow rate. Sorry, calculate for a mass flow rate of 1. The mass flow rate is given as 1 kg per second. And symmetric bleeding. What do we mean by symmetric bleeding? What do we mean by symmetric bleeding? Beta 1 is beta 2. Blade inlet angle, मतलब beta 1 पूछा है. Driving force on the wheel, मतलब tangential force. Tangential force is also known as driving force. Don't worry, I'll explain everything. Driving force. Axial thrust, ये भी मैं बताऊंगा सर. ये भी मैं बताऊंगा सर. Diagram power. Diagram power and diagram efficiency. ये पूछा है सर. These are the things asked. अब हम करेंगे. आगे बढ़े. ये पूछा है. अब आगे बढ़ते हैं. These are the things asked. First हम क्या करेंगे सर? क्या ये मैक्सिमम पूछा है सर? देखो एक बार, क्या ये मैक्सिमम पूछा है सर? नहीं. No means it is a general question. It is a general question. It is a general question. So he has not asked maximum. He has not asked maximum. So this is a general question. So let us take the triangles. आराम से. Tension मत लेना सर. करेक्ट. ट्रायंगल्स हम ड्रॉ कर दिए सर. कूल रहो आप, कूल. अब बताइए, कैन आई फाइंड आउट VW1? कैन आई फाइंड आउट VW1? कैसे? ये V1 है, ये VW1 है. सो व्हाट इज VW1? V1 cos alpha 1. Is it correct or wrong? VW1 is V1 cos alpha 1. VW1 is V1 cos alpha 1. So therefore, VW1 is equal to V1. What is V1? 900 into cos alpha 1. What is alpha 1? It is 20 degree. So anyone with VW1? ये हो गया सर 845.7. ये हो गया आपका. प्लीज बताइए, ये हो गया VW1. Now, can I calculate VF1? I'll tell you why are we calculating VF1. Can I calculate VF1? Yes. What is VF1? V1 sin alpha 1. Is it correct? So VF1 is equal to V1. What is V1? 900 into sin alpha 1. What is alpha 1? Alpha 1 is 20 degree. तो आप बताइए what is VF1? थ्री नॉट सेवन. यहाँ पे प्लेस नहीं है, इट इज मीटर पर सेकंड. ये कंफर्म है, कोई बात नहीं. एक सेकंड. एक और कुछ कैलकुलेट कर सकते सर? अरे यू भी दिया है सर. तो कैन आई कैलकुलेट β1? इधर देखो, tan ऑफ β1. आराम से एनीवन. इनलेट ट्रायंगल, इनलेट ट्रायंगल. tan β1 is
VF1 by tan theta is opposite by this tan beta 1. Tan beta 1 is VF1 by this. What is this? VW1 minus U. Is it correct or wrong? Let me repeat, sir. Tan beta 1. Tan beta 1 is VF1. VF1. Tan beta 1 is this by this. That is VW1 minus U. So therefore, tan of beta 1 is equal to, check करता हूँ sir. VF1 is 307.8 by VW1. What is VW1? 845.7 minus minus U. What is U? What is U? 300. Anyone with beta 1? Anyone with beta 1? 29.4 degree. तो शायद सही है. Yes, beta 1 is known. What is the value of beta 2? What is the value of beta 2? Yes, it is symmetric बोला है. So beta 2 is also equal to 29.42. This is also correct. Wait. क्या पूछा है सर? क्या पूछा है? Now, आराम से देखो. Already beta 2 is known. देखो देखो, beta 2 is known. Can I find out VR2? Already in the problem it is given. VR2 by VR1 is equal to K. So VR2 is equal to K VR1. So VR2 is equal to K is 0.7 into VR1. What is VR1? Anyone, what is VR1? VR1. अरे VR1 तो कैलकुलेट नहीं किए. क्या नहीं कैलकुलेट VR1? करो VR1 कैलकुलेट करो. प्लीज आप VR1 कैलकुलेट करो. Calculate VR1. How do you calculate VR1? Are already beta 1 is known now. एक second. What is sin beta 1? Sin theta is opposite. Sin theta is opposite by sin theta is opposite by hypotenuse. Sin is opposite by hypotenuse. Sin beta 1. Oh, already 29.4. Sin 29.4 is equal to VF1. What is VF1? 307.8 by VR1. तो आप बताइए VR1 का वैल्यू. Anyone in the class? VR1 का वैल्यू 626.6. तो यहां पे पुट करना 626.6. So therefore VR2 is equal to कितना आ रहा है सर? 438.6. तो एक बार VR2 आ गया, so I think there is no problem with outlet triangle. Once VR2 is known, there is no problem with outlet triangle. Is it correct, sir? Is it correct? एक बार outlet triangle draw करेंगे sir. I'll take only outlet triangle. I will take only outlet triangle. ये VR2 हो गया, ये U और ये V2 हो गया. This is beta 2. Correct ना? Is it correct? And what is this value? This is VW2. And ये होगा आपका VF2. Any problem?
क्लियर है? देखो, चेक करो, आप करो, बिल्कुल करो. What is VR2 cos beta 2? चेक करो सर, बिल्कुल सही है. वैभव सेड करेक्टली. लेट्स चेक VR2 cos beta 2. चेक करो वैभव. VR2 कितना है सर? 438.6 cos beta 2. What is beta 2? 29.4. So you will get VR2 cos beta 2. कितना आ रहा है सर? कितना आ रहा है सर? Anyone? कितना आ रहा है सर? It is 382. And what is U? Anyone? What is U? Anyone? What is U? U is 300. कौन सा ज्यादा है सर? This total length is अब ये ट्रायंगल सही है गलत है? Is this triangle correct or not? Absolutely correct. So can I calculate VW2, my dear students? Can I calculate VW2? Can I calculate VW2? Can I calculate VW2? बोलो रे VW2. Can we write VW2 as VR2 cos beta 2 minus U? Can I calculate VW2? VR2 cos beta 2. What is VR2 cos beta 2? It is 382 minus U is 300. So you will get the value of VW2. कितना आ रहा है सर? It is 82 meter per second. Yes, this triangle is correct. So let's calculate tangential. इधर देखो सर. Can I calculate power? Can I calculate power? Power is equal to m dot into VW1 U1 minus VW2 U2. So therefore power will be equal to m dot into U तो same है minus VW2 into ये same है. कोई बात नहीं सर. But should I take plus or minus? Can anyone in the class take? देखो ये plus लूं या minus लूं? Anyone? Should I take plus or minus? Y plus. Y plus, because both are in the opposite direction. VW1, VW2, they are in the opposite direction. So therefore it is plus. अब देखना सर. Can I write force? देखो, power is equal to tangential force into velocity. लिख सकता हूं या नहीं? Power is equal to tangential force. बताया था सर बहुत बार. So therefore force power is equal to tangential force into velocity. Compare करो. Now you compare. U के प्लेस में U है. So therefore the tangential force is m dot into VW1 plus VW2. So therefore the tangential force is m dot. What is m dot? What is m dot? 1 kg per second into VW1. What is VW1? What is VW1? 845.7. And what is VW2? What is VW2? What is VW2? Already we have calculated. What is VW2? 82. It will be in newtons, sir. So the tangential force is given by 927.5 Newton. Any problem, sir? किसी को कोई problem है, sir? सर आप क्यों कंफ्यूज हो रहे सर? एक्चुअली देखो रे बाबा, वेरी सिंपल सर. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. एनी प्रॉब्लम सर? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. बट व्हाट इज m by t? m डॉट इनटू v माइनस u. अगर आपको टेंजेंशियल फोर्स चाहिए तो यहाँ पे टेंजेंशियल आएगा. अगर आपको एक्शियल चाहिए तो यहाँ पे एक्शियल आएगा. नहीं आ रहा है सर? नहीं आ रहा. लेकिन यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस होने के कारण प्लस हुआ. एंड इफ यू वांट एक्शियल फोर्स एग्जैक्टली सेम आएगा. m डॉट इनटू vf1 माइनस vf2. इज इट करेक्ट सर? बोलो सर. आप सम स्टूडेंट्स में भी सेइंग सर व्हाई आर यू नॉट टेकिंग माइनस? अरे यार
देखो एक बार, सॉरी, why are you not taking 2 minus 1? तो in the direction of, see, rate of change of momentum in the direction of motion लिए तो force उस direction में आएगा. तो अगर ये नेगेटिव आ रहा है, मान लो ये नेगेटिव आ रहा है, उसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है. होप यू हैव अंडरस्टूड सिर्स. बोलो सिर्स. नाउ कैन आई कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ VF2? क्या मैं VF2 को कैलकुलेट कर सकता हूं सिर्स? कैन आई कैलकुलेट VF2? एनीवन कैन आई कैलकुलेट VF2? बोलो रे, VF2 को कैलकुलेट कर सकता हूं या नहीं? इधर को VF2. अब देखना, देखो, sin beta 2 is equal to VF2 by VR2. Is this correct? So sin of beta 2. What is beta 2? Sir, आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? Whatever I am teaching, are you following? So why are you finding out VF1, VF2? Because axial direction में force कितना है? So axial direction में तो 29.42, it is 29.42 is equal to VF2 by VR2. What is VR2? Anyone? What is VR2? 438.6. बोलो सर, 438.6. बोलो. तो यहां से we can calculate VF2. Anyone? यहां से VF2 आएगा 438.6 into 29. कितना आ रहा है सर? (215.4). Therefore, the axial thrust is given by m dot is 1, VF1. What is VF1? 307.8 minus VF2. What is VF2? 215.4. तो कितना आएगा सर ये एक्शियल फोर्स? 92.3 न्यूटन. आपको पॉजिटिव आया का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ही एक्सियल थ्रस्ट आ रहा है. बोलो सर, इन एक्सियल थ्रस्ट इन द डायरेक्शन. सो अगर 1 minus 2 इस डायरेक्शन में, देखो कौन सा वैल्यू ज्यादा है सर, VF1 और VF2? विच वैल्यू इज मोर? VF1. तो VF1 इज नहीं आ रहा सर. VF1 देखो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये VF1, ये VF2. विच वैल्यू इज मोर? ये वैल्यू ज्यादा VF1. तो इसी डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है, इसी डायरेक्शन में फोर्स आ रहा है. इज इट करेक्ट? बोलो सर. और क्या पूछा है सर? Axial thrust is over driving force or tangential force. This driving force is also known as tangential force. Diagram power. Already diagram power we have calculated now. How do I calculate diagram power? Power is equal to m dot into VW1 plus VW2 into U. So therefore, power is equal to, already you have calculated, this is tangential force. Already we have calculated, this is tangential force. Already we have calculated. So therefore, the power is given by, so what is this? FT. What FT into U? So what is FT into U? What is FT, sirs? FT. Already we have calculated. FT कितना है? 927.5 ना, 927.5 into U is 300. This is Newton, this is meter per second. Newton meter is joule per second. So therefore, this is so many watt. तो कितना आ रहा है सर ये? So power is equal to कितना आ रहा है? So this can be written as 278.2 kilowatt. Clear? अभी कुछ चाहिए सर?
अभी कुछ चाहिए? I think he is also asking diagram efficiency. Power is also over. All of you, are you getting Ray? Diagram efficiency. What is the equation, sir? What is the equation? The generalized, it is not maximum, sir. ये maximum नहीं पूछ. No, सौरभ गलत है, गलत है सौरभ, 100% गलत है. कितना गलत दे रहा है देखो, वो तो मैक्सिमम के लिए है, कहीं पे मैक्सिमम बोला रहे? क्यों गलत आंसर देते रहे? कहीं पे बोला है सर? वही तो प्रॉब्लम है आपके साथ. दैट इज द प्रॉब्लम विथ यू. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन? क्या है सर? इधर देखो, जनरल इक्वेशन क्या है, इधर देखना. जनरल इक्वेशन ऑफ एफिशिएंसी, डायग्राम एफिशिएंसी, जनरल इक्वेशन. इधर देखो, द जनरल इक्वेशन ऑफ डायग्राम. बोलो सर, जनरल इक्वेशन ऑफ डायग्राम एफिशिएंसी. देखो यहां कहां गया, देखो 2u vw1 plus vw2 by v1 square. 2u vw1 plus vw2 by v1 square. Correct. So the diagram efficiency is given by 2 into u. What is u? 300. vw1 plus vw2. What is vw1? vw1 845.7. vw2 vw2 82 na? Is it 82? Yes. v1 square v1 square v1 square v1 square is 900 square. So the diagram efficiency कितना आ रहा है सर? 0.687 और 68.7%. Is that fine? Wonderful sir. एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर्स. Yes, absolutely fine. अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ सर. थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है सर. याद रखने का क्या है, कोई do not by heart anything, don't by heart anything, do not by heart anything. आज थक गए हैं सर हम. देखो अच्छा, इसमें कहां से शुरू करें? इसमें V1 दिया जाएगा, अल्फा दिया जाएगा, VW1 से स्टार्ट करना. लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's take the next question. अच्छा, डी लेवल का मतलब है, वेरी गुड, इट इज द टर्बाइन. डी लेवल नहीं, अरे ये गलत लिखा है ये स्टूडेंट. डी लेवल LAVL, डी लेवल टर्बाइन. इसका मतलब इट इज अ सिंपल इंपल्स टर्बाइन. डी लेवल टर्बाइन इज अ सिंपल इंपल्स टर्बाइन. यहां लिखता हूं सर, इट इज अ सिंपल इंपल्स टर्बाइन. यहां लिखता हूं सर, आराम से, कोई टेंशन मत लेना सर. डी लेवल इज अ
It is a D-level turbine means simple impulse turbine. Is that fine? It is a simple impulse turbine. It is a simple impulse turbine. It is a simple impulse turbine. Okay. What do you mean by simple? ये सब बताता हूँ. When I start teaching you compounding, pressure compounding, velocity compounding, pressure velocity compounding, तब पता चलेगा ये. What is the meaning of simple? Is it okay, sirs? Is it okay, sirs? क्योंकि ना ये बहुत सारी चीजें पढ़ना है. D level is a simple impulse. Pelton wheel कैसा impulse turbine है? D level is a simple impulse turbine. तो आप यहाँ पे शब्द simple पे फोकस करना. I'll tell you, sir. पढ़ो एक बार सवाल को. पढ़ो एक बार सवाल को. अब देखो. ओके, लेट मी ड्रॉ ट्रायंगल्स. यहां पे एक कंफ्यूजन क्या है? ब्लेड स्पीड दिया है. ब्लेड एक्चुअली मीन ब्लेड स्पीड है, ब्लेडिंग नहीं है. पूरे मिस्टेक्स लिखा. इज 180. U is equal to 180 meter per second. The nozzles are inclined at 17 degree. मतलब alpha 1 is 17 degree. Correct? Correct, sirs? Next. The velocity of steam through nozzle V1. देखो V1 550. For a mass flow rate of, what is the mass flow rate given? कितना दिया? 3300 kg per hour. इधर देखो. Okay. Zero axial thrust. कुछ बताएंगे सर? What is the meaning of zero axial thrust? कुछ बताएंगे सर? देखो, the axial thrust is given by m dot into Vf1 minus Vf2. Axial thrust is zero. What do you mean by zero axial thrust? तो m dot तो zero हो ही नहीं सकता. Vf1 is equal to Vf2. तो यहां पे दिया है. और क्या बोला है? एंड फॉर एक्चुअल एग्जिट कंडीशंस, देखो देखो देखो, पहले एग्जिट ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे सर. एक्चुअल एग्जिट मतलब एग्जिट वेलोसिटी, जो एक्चुअल एग्जिट का मतलब होता है, जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकल रहा है ना, वो एक्चुअल डायरेक्शन में है. देखो एक बार, देखो रे, लेट मी ड्रॉ. देखो देखो, it will come out with relative velocity. Very good, Nitish. Whenever he says actual exit conditions, actual exit conditions, actual exit conditions, actual exit conditions, इसका मतलब ये actual direction में होगा. That's it. VW2 is 0. Whenever he says actual exit conditions, V2 is VF2, VW2 is 0. That is the meaning here. This is VR2. This is beta 2. This is V2 is equal to VF2.
के कहां पे दिया है, कुछ दिया है, चेक करता हूं सर। नहीं दिया है, ओके ओके एग्जैक्टली, हाँ हाँ यस। वेट, इज द एग्जिट ट्रायंगल क्लियर? क्या एग्जिट ट्रायंगल क्लियर है सभी को? क्या एग्जिट ट्रायंगल क्लियर? अब इनलेट ट्रायंगल ड्रॉ करो। करेक्ट ना? सेम ट्रायंगल देखो, कोई प्रॉब्लम है सर? इज देयर एनी प्रॉब्लम? देखो, आराम से देखो, आराम से देखो, एक बार फोकस करेंगे सर, प्लीज प्लीज लिसन। इज V1 गिवन? आप बताइए व्हाट इज VF1? इनलेट ट्रायंगल से व्हाट इज VF1? V1 sin alpha 1. VF1 is V1 sin alpha 1. VF1 is V1 sin alpha 1. VF1 is V1 sin alpha 1. Is it correct? Is it correct or wrong? अरे यार, VF1 is this triangle, ये वाला triangle. What is VF1? V1 sin alpha 1. So therefore VF1 is equal to V1 is 550 into sine alpha 1 is 17 degree. So VF1 is equal to 160.8 meter per second. So can you give me what is VF2? Can you give me what is VF2? It is same as VF1. तो कितना आ रहा है सर? 160.8. 160.8. Is it okay? Very good. VF2 is known. U is known. कोई प्रॉब्लम है सर VR2 कैलकुलेट करने का? कोई प्रॉब्लम है सर VR2 कैलकुलेट करने का? ओके, चलो आप tan beta 2, what is tan beta 2? Tan beta 2 is VF2 by tan is opposite by this by U. Tan is this. So therefore 160.8 by 180. तो beta 2 कितना आ रहा है सर? beta 2 आ गया. So अब आप बताइए what is VR2? This is equal to under root of VF2 square plus U square. VR2 is this square is this is equal to this square plus this square. So VR2 is equal to under root of VF2 square is 160.8 square plus 180 square. So anyone with VR2? No.
अभी कैसे कैलकुलेट करें सर? अब कैसे, अभी कहां VR1 को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं या नहीं? एक सेकंड देखो, कैन आई कैलकुलेट VR1? एनीवन इन द क्लास? VF1 is already known. VF1 is already known. What is VF1? What is VF1? What is VF1? 160.8. देखो देखो, VF1 is 160.8. इधर देखना, what is sin, आहा, V1 तो पता है. Is beta1 known? Is beta1 known? Yes. What is sin beta1? Anyone in the class? What is sin beta1? Sin beta1 is VF1. Sin beta1 is, अरे बोलो रे, sin beta1 is, sin beta1 कितना है रे? Already beta1 is known ना? Is beta1 known? No, एक सेकंड. Is beta1 known? कौन सा क्वेश्चन है रे? beta1 दिया है, alpha1 is given ना, तो alpha1 से I think we can calculate beta1. Yes. देखो, what is tan beta1? Tan beta1 is VF1 by tan beta1 is VF1 by VW1 minus U. Is it correct? But how do I find out VW1? VW1 is V1 cos alpha 1. I repeat, VW1 is V1, ये साइन है cos alpha 1. So VW1 is V1. What is V1? 550 into cos alpha 1. What is alpha 1? Alpha 1 कितना है? 17. It is V1. V1 कितना है? 550 into cos alpha 1 is 17. VW1 is equal to V1. V1 is, anyone? 550 into cos alpha 1 is 17 degree. What is the value of VW1? Is it 525? Yes, 525.96. So VW1 आ गया. So let us find out beta1. So VF1 is 160.8 by VW1 is 525.96 minus U. It is 180. What is beta1? 24.9. So once beta1 is known, can I calculate VR1? Once beta1 is known, can I calculate VR1? Tan beta1 is equal to V of, sorry, not tan. Sin beta1 is equal to, sin beta1 is VF1 by VR1. So sin of beta1, what is beta1? What is beta1? 24.9 na? Is it 24.9? VF1. What is VF1? 160.8 by VR1. So what is VR1? So can I use VR1 is equal to VR2? Definitely VR2 is less. Can I use VR1 is equal to VR2? Can I use VR1 is equal to VR2? बिल्कुल नहीं sir. Because when it is not possible to do, then you can do. When it is not possible to do, then you do. Otherwise, no.
Is that fine? Wonderful, sirs. Wonderful. 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 हाँ, बिल्कुल. No need. Now what do you want? देखो, you want inlet outlet blade angles already there. Is it symmetrical blading? Is it symmetrical blading? Is it symmetrical blading? No. No. So beta 1, beta 2 are not same. Beta 1, beta 2 are not same. It's not symmetric. It's not symmetric. It's not symmetric. और एक बात, क्या चाहिए आपको? What do you want? ये होगा. This we have already calculated. Inlet outlet blade. Power diagram efficiency. Power and diagram efficiency. Power and diagram efficiency. What is power? It is m dot into VW1 plus VW2 into U. Is it correct? And you just tell me VW1, VW2, are they in the same direction or opposite direction? Are they in the same direction or opposite direction? देखो एक बार VR2 cos beta. अरे VW2 is 0 ना, useless fellows. VW2 is 0. M dot 3300 kg per hour. 3300 kg per hour is 3600 into VW1. What is VW1? What is VW1? 525.96 into U. U. What is U? 180. Let's check the unit. This is kg per second. This is meter per second. This is meter per second. Kg meter per second square. Kg meter per second square is Newton meter per second. Newton meter is joule per second. This is what? कितना आ रहा है sir? Anyone? What is the power? 86783 watt or 86.78 kilowatt. Last one. What is the last one? What is the last one? Diagram efficiency. Diagram efficiency. Diagram efficiency. What is diagram efficiency? Very simple, sirs. Diagram efficiency we can calculate by using diagram power, or this is also runner power by kinetic energy. Is that fine? So I think I have given you the equation. Directly you can calculate, or I have already given you 2U into VW1 plus or minus VW2 by V1 square. Is that right? So already this is 0. So therefore diagram efficiency is given by 2U VW1 by V1 square. So the diagram efficiency is 2 into U. What is U? What is U? 180. VW1. VW1. VW1 is 525.96. by V1 square. What is V1 square? What is V1 square? 550 square. So anyone with this? Is that fine? No, nahi. See, when surfaces are frictionless, relative velocity is not changing. When surfaces are frictionless, relative velocities are not changing. Is that fine? Is that fine? Is that okay? Okay. Right. Hope this is clear.
So we'll see in the next class like some more important things like what is Curtis turbine, what is क्या बोलते हैं rat turbine, what is pressure velocity compounding. All these will be discussing in detail. Is there any problem? Okay, hope you have understood.